Hello and welcome to Jasuja-PropEquity, and I'm Samir. Every week, we bring you content based on the most insightful and detailed real estate data and analytics. Whether you are a home buyer, an investor, or just someone interested in understanding the real estate market better, you will find all the information converted into knowledge and wisdom right here on our channel. At PropEquity, we specialize in tracking real estate trends like no one else. With data tracked over 17 years on more than 1,73,000 projects across 44 cities in India, we offer the most comprehensive analysis of market trends. We are also proud to be the only company in India that has invested over 150 crores to create accurate, actionable intelligence for all the stakeholders who are associated with the real estate industry. Recently, we released a report focusing on the price appreciation trends of the top 30 Tier 2 cities over the last 1 year. These cities are becoming the new hotspots for real estate development and investment, thanks to their fast-paced growth and untapped potential. When we compare the data of these cities from pre-COVID time to now, that is 2019 to 2023, the numbers validate the exponential and historical growth witnessed like never before. For example, the number of units launched in 2019 in these tier 2 cities were approximately 1,32,000 units, which went up to 1,62,000 units in 2023. That's an increase of just 22%. However, when you look at the value of real estate, it has gone up from 59,614 crores to a whopping 1,41,339 crores, which is a huge growth of 137% in just 4 years. The price appreciation of the last 1 year for each of the 30 cities is provided in a link in the description below. In today's video, we will share the key reasons driving the growth in Tier 2 cities. We will also share details of 5 or 6 cities, including their reasons for their appreciation. I encourage you to stay with me until the end of this video so that you get deep insights into which city to invest in for the highest return on your investment. Please like, share, and subscribe to our channel and share your valuable comments, which will help us make our content more specific and better. Now let's dive into the reasons or factors driving the growth in Tier 2 cities and how they are playing a pivotal role in India's development story. The first point is renewed interest from developers and investors. Tier 2 cities are attracting the attention of developers, corporates, and financial institutions due to their untapped potential and affordability. Think of Tier 2 cities as hidden gems, less polished but full of promise. Developers see them as attractive grounds to introduce premium and affordable housing projects without the hefty costs associated with it. The gap between land prices in metros compared to Tier 2 cities has grown even more because in the last 5 years, Tier 2 cities have gone up by 2x in comparison to the 3x in Tier 1 cities, making the gap even wider. Added to that, cities like the Tri-City of Chandigarh, Lucknow and Jaipur are witnessing a shift to modern residential complexes similar to the early growth stories witnessed in Bangalore, Pune and NCR. The next point is infrastructure development, which is the backbone of the real estate industry and its growth. And Tier 2 cities are witnessing an unprecedented growth in this area. Whether it's highways, new metro projects, enhanced road networks, or upgraded airports, these cities are becoming more attractive and accessible. For example, metro connectivity in cities like Nagpur and Agra has shortened commute times and improved urban mobility. Airport expansions in cities like Mangalore and Lucknow have been key for commuting for business travelers and boosting international connectivity. The next point is emerging economic and industrial hubs. Many Tier 2 cities are positioning themselves as the next hub for employment and economic activity.
Industries, IT parks, and manufacturing zones are driving job creation and housing demand in these areas, offering not only a cheaper but also larger commercial spaces compared to metros like Bangalore and Mumbai. Examples like Coimbatore as a textile hub with booming IT parks, Gandhinagar with its InfoCity, a 150-acre IT park comparable to Gurgaon's Cyber City. The next point is affordable property prices and cost of living. Unlike tier 1 cities where sky high property prices and living costs deter many potential buyers, tier 2 cities are offering an appealing contrast. A premium apartment in tier 1 cities, except Gurgaon and Mumbai, today cost at 11,000 rupees a square foot. Compare that to tier 2 cities where the price is far more affordable and stands at only 4,500 rupees a square foot, which is less than half when compared to tier 1 cities. And we're not even comparing them to Gurgaon and Mumbai, which are upwards of 20,000 rupees a square foot. The next but equally important factor contributing to the growth of tier 2 cities is government initiatives. Government programs and policies play a large role in shaping the growth of tier 2 cities. Initiatives like Smart Cities Mission, special economic zones, and tax incentives boost urban development and investor confidence. Initiatives such as the Housing for All, Atal Mission for Rejuvenation, and Urban Transformation Amrut in cities like Jaipur and Nagpur, and Smart Cities Mission focus on infrastructural development, affordable housing, and urban rejuvenation have truly helped grow many cities, including Chandigarh and Indore. Finally, the one large driving force is the quality of life. Tier 2 cities now offer much better social infrastructure. For example, top hospitals like Medanta and Max are expanding to many Tier 2 cities. Developers are building high end malls with luxury brands which offer a great lifestyle. Also, because of unlivable pollution and traffic issues in Tier 1 cities like NCR, Mumbai, and Bangalore, people are finding investing in tier 2 cities a much better option. Example, a small city like Indore has been ranked continuously as the cleanest city in India for the last 3 years. Now let's look at a few of the cities that have appreciated very well and the reasons for their growth. Let's begin with Jaipur. Jaipur's growth is powered by major projects like the Delhi Mumbai Expressway and RRTS, which has boosted connectivity in a big way. The Jaipur Metro is easing commute timing, and the city has become a startup hub with initiatives like Startup Oasis. In 2024, Jaipur's average property prices have gone up to rupees 6979 rupees a square foot, which is a 65% rise in the last 1 year. The city, which is the state capital, has very limited supply, and that's also the reason for the growth in pricing. The supply stood at 6475 units. However, the sales in the same time were above 9300 units, which clearly shows that the demand is much higher than the supply. Now let's look at Mangalore, where property prices have reached a whopping 8,000 rupees a square foot in 2024, with a 41% appreciation over the past year. The supply here stood at 1,300 odd units, whereas the sales were upwards of 1,500 units, which again shows demand is much higher than the supply in this city and thus the high price appreciation. The key drivers here come from the ONGC SEZ and the 35,000 crore investments in petrochemical industries, which is creating jobs and boosting real estate demand. The city also benefits from its international airport. Next city is Gandhinagar in Gujarat. In Gandhinagar, the average price in 2024 stood at over 4,800 rupees per square foot, which is a 19% rise from the previous year. New supply was around 10,000 units and sales stood at over 12,000 units. In this city as well, demand has outstripped supply, and now we can see a clear trend where demand is more than the supply. The price appreciation is quite robust. In this city, the employment growth is driven by over 8,000 industries, fueling big housing demand. Projects like the Ahmedabad Gandhinagar Metro
and InfoCity has transformed Gandhinagar into a modern urban center. The next city on our list is Indore. In 2024, the weighted average price here stood at over 6,000 rupees per square foot, reflecting a 20% price appreciation over the last year. Here also the supply demand dynamics are favoring the demand, leading to a good price appreciation. Indore's development as a major commercial and educational hub has been clearly established, with premier institutions like IIM and IIT driving its appeal. Recognized as India's cleanest city, Indore also benefits from strategic connectivity to Mumbai, Delhi, and Ahmedabad. Key projects like the Indore Metro, Super Corridor development, and the 450 crores allocated for road upgrades further enhance its infrastructure. Now, finally, let's talk about Agra, which has seen great appreciation of over 30% in the past 1 year itself, owing to extremely limited supply. Known globally for the Taj Mahal, Agra's real estate growth is also fueled by tourism and infrastructure development. Infrastructure projects like the Agra-Lucknow Expressway, the proposed Agra Metro, and a new ring road have enhanced connectivity substantially. The Yamuna Expressway connecting Greater Noida to Agra is a huge positive for this city. The new Jewar Airport in Greater Noida is only now 137 kilometers from Agra. That means that you can reach an international airport within 2 hours. Earlier in the week, I gave an interview on this report to Z News and spoke in detail about the Tier 2 cities' price appreciation. Let's listen in. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। और अब बात करते हैं टीयर 2 शहरों की। देश में बीते एक साल में घरों की कीमतों के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो सिटीज को काफी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 30 शहरों में घरों की कीमतें बीते एक साल में 65% तक बढ़ी हैं। हालांकि कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां घरों की कीमतें गिरती हुई भी दिखी हैं। तो क्या फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इन टीयर 2 शहरों में घरों की कीमतों को प्रभावित किया है? प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट है जो इन शहरों के रियल एस्टेट मार्केट पर नजर रखती है। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समीर जसूजा, आप सीईओ और फाउंडर हैं प्रॉप इक्विटी के, और रवि सिन्हा हैं जो कि सीईओ हैं ट्रैक टू रियल्टी के। तो रवि जी और समीर जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले समीर जी आपके पास ही आएंगे। घरों की कीमत के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 65% की ग्रोथ आश्चर्यजनक है। और क्या इंसाइट्स हैं आपके रिपोर्ट के और मेथोडोलॉजी क्या रही है? तो देखिए, जो पहले तो मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि मेथोडोलॉजी जो है वो ये है कि जो लॉन्चेस होती हैं नए प्रोजेक्ट्स की, उनकी प्राइसेस काफी ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें, जैसे कि पिछले साल में एक क्वार्टर में कितनी लॉन्चेस हुई थी और किस प्राइस पे हुई थी, उसकी वेटेड एवरेज प्राइस ली जाती है और उसको इस साल की लॉन्चेस से कंपेयर किया जाता है on the weighted average price, so it is a very accurate way. ये तो बात हुई मेथोडोलॉजी की, लेकिन रीजन क्या रहे हैं सर, वो भी बताइए। अब रीजंस पे आते हैं। रीजंस काफी महत्वपूर्ण रीजंस हैं। देखिए, हम ना रियल एस्टेट को कोविड के बाद से देख रहे हैं, और कोविड के बाद से अगर आप देखते हैं जो कि पिछले 4 सालों से है, तो टीयर 1 सिटीज और टीयर 2 सिटीज में काफी अप्रिसिएशन आई है। कई सिटीज में 4 गुना प्राइसेस हो गई हैं और कई सिटीज में 2 गुना हो गई हैं। और टीयर 2 सिटीज थोड़ा कैचअप गेम खेल रहे हैं। पोस्ट कोविड रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज डन एक्सीडिंगली वेल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। वन इज द कैचअप ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल का जो कैचअप है वो हुआ है पिछले 4 सालों में। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। और तीसरा कारण ये है कि डिमांड जेन्युइनली वापस मार्केट में आए हैं, इन्वेस्टर्स का रुझान आया है मार्केट में, कॉन्फिडेंस आया है, और स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा किया और स्टॉक मार्केट से भी लोगों ने पैसे निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। रवि जी, जिस तरह से टीयर 2 शहरों में प्राइस ग्रोथ दिख रही है, ऐसे में तो लग रहा है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट तोड़ के जयपुर में ही प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस ग्रोथ को? देखिए, टीयर 2 सिटीज के सेलेक्ट पॉकेट में ये ग्रोथ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अक्रॉस द सिटी ये ग्रोथ है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अयोध्या चले जाएं। अयोध्या में ये राम मंदिर का जो इन्फ्लुएंस एरिया है
वहां पे प्राइसेस 200% भी अप्रिसिएट हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अक्रॉस द सिटीज वो प्राइस एप्रिसिएशन मिल रहा है। कई शहरों में डीग्रोथ की भी कहानी है। अब सवाल उठता है, आप कौन से पॉकेट को बेंचमार्क बना रहे हैं? इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में पूरे शहर का डाटा निकाल करके एवरेज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जब भी इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट की बात होती है, माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि मैं जयपुर में 65% देखकर चला गया हूं, अगर मैं किसी ऐसे लोकेशन में चला गया जहां की ग्रोथ 5% है, 7% है, मुझे लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा। बिल्कुल। अगर आप हॉलिस्टिकली देखना चाहते हैं तो हॉलिस्टिकली टीयर टू की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है, यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समीर जी, आमतौर पर हम प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते देखते हैं लेकिन कम होना कम ही दिखता है। लेकिन भोपाल, मोहाली, सोनीपत और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में कीमतें गिरी हैं, क्या कारण है इसके? सर, इसके दो कारण है प्राइमरली। पहला तो ये है कि जैसे रवि जी बोल रहे थे कि माइक्रो मार्केट वाइज कुछ जगह प्राइसेस बढ़ती है और कुछ जगह प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ती हैं। तो उस टाइम फ्रेम पे जिस माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, और आज के टाइम पे जो माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, वो शायद डिफरेंट माइक्रो मार्केट हो सकती है। बट ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे है प्राइस को कैप्चर करने का। सेकेंडली, जो आप 65% बोल रहे हैं वो एक ही सिटी में हुई है, बाकी सिटीज में बहुत कम प्राइस अप्रिसिएशन भी हुई है। बट ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, जो हमने इस रिपोर्ट में नहीं दिया है, तो कई सिटीज में ओवरऑल भी वेटेड एवरेज प्राइस दुगनी तो हुई ही है। रवि जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आप हमेशा, हम ये सवाल कई एकेडमिक लेवल पर मुझसे पूछा गया है कि टीयर टू सिटीज में ये ग्रोथ क्यों हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि टीयर वन सिटीज जो है एवरेज वर्किंग क्लास के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है, क्योंकि जो प्राइस ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में हुआ है, आपका सैलरी ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया है। तो अब लोग देख रहे हैं कि टीयर टू सिटीज में भी रहकर काम करना फिजिबल है, वहां एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा है, वहां आपको लोअर प्राइस बैंड पे घर मिल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं टीयर टू सिटीज की ग्रोथ स्टोरी की ये बिगनिंग है। बिल्कुल। आगे चलकर यहां अच्छा ग्रोथ दिखेगा। बिल्कुल समीर जी, जैसे रवि जी ने कहा कि टीयर टू शहरों में प्राइस ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है, इसी तरह हमने कुशमैन की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन से टीयर टू शहरों में ग्रोथ की बात की गई है। आपका डेटा उससे कितना मैच कर रहा है, पहली बात, और टीयर टू शहरों के इस साइकिल का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल कर रहा है सर। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इंडिया के टॉप 100 डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, 100 बैंक्स के साथ काम करते हैं, एनबीएफसी के साथ काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ काम करते हैं। और हमने बहुत रिसेंटली, पिछले 1 साल से, जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज को कोई पूछता भी नहीं था, वो अब हमसे उसकी रिक्वायरमेंट करना शुरू कर चुके हैं, उसके डेटा की, उसके एनालिसिस की। तो बहुत सारी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज की, बोथ फ्रॉम डेवलपर्स, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। बट इसका सबसे बड़ा कारण सर ये है, विच इज अर्बनाइजेशन, जैसे आपने टच किया, और माइग्रेशन। सो अगर आप ये देखें कि आज की डेट में हमारी अर्बनाइजेशन टीयर वन सिटीज की और कुछ टीयर टू सिटीज की 30% पे है, वो आने वाले 10 सालों में इज प्रिडिक्टेड टू बी 50 से 60%। ओके। और अगर ये माइग्रेशन इतनी ज्यादा हुई और अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा हुई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है और इतने घर नहीं बन रहे हैं, अगर आप टीयर टू की सारी सिटीज को मिला लें, हम्म। और उन सिटीज में 30 सिटीज में 2.25 लाख घर बन रहे हैं, और उन्हीं सिटीज में अगर आप आने आने वाले 10 सालों में देखेंगे कितनी माइग्रेशन होगी, वो उससे 10 टाइम ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल, यानी अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क समेत कई कारण हैं जो टीयर टू शहरों में घरों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ शहर कीमतें उनमें कम होती हुई भी दिख रही हैं। हालांकि जो संकेत हैं उससे साफ है कि छोटे शहरों की ग्रोथ स्टोरी शुरू हो चुकी है। रवि जी, समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed the video. We will share the links to all the information regarding all 30 cities for you to go through. If you have any questions regarding any of the other cities that we have not spoken about, please write to us at www.propequity.in. And this is Samir signing off.